Good morning, students, and I hope you all are doing well at your places. Today, we'll be doing a very important writing skill, that is letter writing. See, there are many, we have studied about several writing skills, but this is one of the most writing skill that I came across in your day-to-day lives also, because sometimes we have to write a letter to our friend, to our sibling, right? Sometimes to the letter to the editor, sometimes it's a business letter, sometimes it's an authority letter, and whatever, right? But what is the difference between a letter writing and an application writing? See, letter writing is always, in letter writing there is a revert. हम लोग को वापस back revert आएगा, reply आएगा. But in case of application writing, it is basically used to request someone. You have to request to a bank manager कि आप हमारे लिए ये कर दीजिए. Please issue me a checkbook. Please do me the NEFTs and RTGS. Right? Sometimes we used to write an application to the principal that please grant me leave for 2 days, 5 days, whatever. But in return, these people, they don't revert to us back. But in case of letter writing, because there are of two types, that is formal and informal in your standard. But as you move to the higher standards, you will came across several types of letter in basically in class 12. So today we'll be studying about letter writing. First, we'll be learning the format, and then we'll be giving some examples, and it will be very easy for you to identify, to learn, and write down all the letter writing on your own. So let's just begin with this. So it's letter writing. See, it is an important skill to develop. बहुत ही ज़्यादा important skill है. ये एक written communication का form है. And as we all know, what is communication? Communication is a process of exchanging our thoughts. In case there in communication there are four people. First is the sender, then it's the बेसिकली बीच में क्या होता है, एक हमारे जो भी बात होती है, एक चैनल होता है जिसको आपको भेजना है, मैसेज हो गया. देन वो किसके पास जाता है, वो हमारे चैनल के थ्रू जाता है. और हम यहाँ फिर एक एनकोडर होता है जिसको हम वो उस चीज को क्या करता है, एनकोड करता है. फिर सामने वाला चीजें इसे रिसीव करता है. और फिर एक होती है डिकोडिंग, मतलब जो सामने वाला है रिसीवर, वो उसे अपनी भाषा में डिकोड करके पढ़ता है. राइट, विच इज एन इम्पोर्टेंट इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दोनों मैटर्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो द लेटर्स विच आर इनफॉर्मली रिटन टू, द लेटर्स जो इनफॉर्मल होते हैं, दे आर रिटन टू दी फ्रेंड्स, relatives, उन्हीं को हम बोलते हैं informal letter. While those letters which are written to the authorities, to the principal, yes, to an authority, principal, editors, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, formal letters और applications बोलते हैं. Now, what is the format of informal letter? First we have to write the sender address कि आप कहाँ भेज रहे हैं, और वो लेफ्ट में लिखा जाता है. इट शुड बी एक्यूरेट एंड फुल. कॉमा और फुल स्टॉप उसमें यूज नहीं होते हैं, फुल स्टॉप्स एंड कॉमास हम नहीं यूज करेंगे. देन कम्स दी डेट. डेट आप हमेशा इसी फॉर्मेट में रखिए. सपोज टुडे इज 22nd October 24. नो नीड टू राइट दी कॉमास एंड हाइफन्स एंड स्लैशेस इन बिटवीन दी डेट्स. Then the salutation. Salutation means greeting, right? Like respect ma'am, dear ma'am, right? This is a way to address the recipient of the letter. Recipient means the one who will be receiving, and it varies for person to person depending on how close you are to them, right? Moving on to the body of the letter, it is the main part which describes the purpose for writing a letter. What is the purpose, what is the aim of writing the letter? Then comes the complimentary note. देखिए एक होता है complimentary, ये PLI. इस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है. और इस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीट करना, राइट? इट इज अ courteous act of taking the leaves before ending the letter. Like, I'll be highly thankful for you if you will grant my request. I'll be highly obliged, वो वाला. और हमारे सिग्नेचर्स होते हैं which has to be put in the, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ये सेंडर एड्रेस है, ये डेट है. नो नीड टू पुट ऑल दीज थिंग्स, राइट? दिस इज एन ओल्ड फॉर्मेट, प्लीज डोंट write this. The accurate format is this, right? This is the salutation, किसी को greet करना. It's written, I thank you from the bottom of the heart for sending a wonderful gift on my birthday, and it's very kind that you remember my birthday. आपको मेरा birthday याद है. So you are very busy in your day-to-day life, or in your आप कह सकते हैं in your relative wedding, yet you have shown your real affection. Affection means love, right? Yours affectionately, Rahul, right? Moving on to the next, that is formal letter. Again, you can see there is a sender address जिसके अंदर कोई full stop सब कुछ नहीं आएगा, same as the previous one. Recipient letter में भी यही होगा. It is written without the commas and full stop, जो recipient वाला होगा. Then comes the date, जो कि full indicates the reader कि आपने ये letter कब लिखा था. Subject basically the aim of the letter, वो किस में आएगा, फॉर्मल लेटर में. सपोज कि मेरे को अपने घर में ड्रेनेज का सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा है, आई हैव टू सॉल्व दैट. देन कम्स दी सैल्यूटेशन.
person to whom you are writing the letter, and again the body, that is the main part, closing note, आप किसी को greet कर रहे हैं, and signatures, that is it should be put at the end of the letter, right? An example, you have to write the principal to change her name in the school record. Again, you can see this is what, this is a sender address, right? This is the basically आपको जहाँ पे लिखना है, then comes the date over here, no need to put all these things, then comes the subject, what is the, please it's the request for the correction of the name, okay, then it's the salutation, then it says with due respect I want to say that I am आशीष कुमार, किसका सन हूँ मैं, अविनाश का, ठीक है, क्लास 5th में मैं पढ़ता हूँ और मेरा नाम जो है वो अश्विन है, कुमार है, जो कि बहुत ही ज्यादा इनकरेक्ट है, आपने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, प्लीज उसको आशीष कुमार में कर दीजिए। और हमने एक लाइन पढ़ी है यहाँ पे, क्लोजिंग नोट, दिस इज द क्लोजिंग नोट, kindly make the necessary change, I'll be highly grateful to you, this is the closing note, and again it's yours obediently Ashish Kumar, right? No need to put any apostrophe over here. If you will put this apostrophe like this, then he will be considered as non-living. Please don't do this. Moving on to the next formal letter example, you have to write a letter to the MC, that is municipal commissioner, to your locality, complaining about the proper cleanliness, आपके एरिया में cleanliness हो. Again you can see the sender address, जिसको आप recipient address लिख रहे हैं, then the date, and then comes the subject, that is letter for the issuing the cleanliness issue in the area, then it's the salutation, then this is to bring to your kind notice ये वाला वार्ड नंबर इस जगह का, it is not being closed, it is not being cleaned every day, properly रोज clean नहीं होता है, और बहुत सारे heaps of rubbish lying everywhere, heaps means गट्ठे बने हुए हैं, ढेर बने हुए हैं कुछ फालतू की चीजों के, और ड्रेन्स जो है, नालियां जो है वो एकदम डॉग हो चुकी है, मीन्स वो कैसे हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, डर्टी वाटर स्पिल्स हो चुके हैं, जगह जगह कूड़े पड़े हैं, रोड्स भी स्वेप्ट नहीं हुई है, बहुत दिन से झाड़ू नहीं लगी है, और मच्छियां मच्छियां कह रहे हैं, मक्खियां वगैरह आ रही हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिजीजेस हो सकती हैं. दिस इज द क्लोजिंग नोट दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक अर्जेंट एक्शंस ऑन दिस मैटर बिकॉज देयर इज एन आउटब्रेक. आउटब्रेक मीन्स आपदा आ सकती है. And again, this is thanking you, yours truly, yours lovingly, yours affectionately, yours obediently, yours faithfully, कुछ भी लिखिए. Then comes the Rajesh, that is the name, right? And I hope you all understood both the letters, that is formal and informal. Please make sure that you will do all these exercises given below on your own. And please do write these applications and letters on your own. Just frame it. कोई बात नहीं, आज गलत होगा, कल बिल्कुल ठीक होगा. And please keep studying hard for your exam and stay hydrated.